I just unlocked another country and आज सुबह की फ्लाइट थी फ्रॉम वियतनाम 7 बजे की फ्लाइट एंड आई रीच्ड हियर इन माई हॉस्टल लाइक 2 बजे मैं पहुंची हूँ फाइनली एंड नाउ आई एम एट द बीच एंड दिस इज सो रिफ्रेशिंग जस्ट लुक एट द सनसेट बिहाइंड मी एंड द वेव्स आर सो हाई लाइक मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है उनको देख के बट मज़ा भी बहुत आ रहा है। अभी तक वैसे मैंने यहाँ पे आके कुछ भी नहीं किया, just went to have some local food here and it was quite nice but और explore करूँगी अभी खाना। Let's enjoy the sunset now. So I finally bought this SIM on day 2 and it's Telkomsel brand and 24 GB 30 days validity is what I've got and it was the cheapest and it costed me 850 rupees, so I think the cheapest was also very expensive on the pocket. So I'm staying at the Seminyak area and Seminyak, Kuta and Canggu are the 3 places which are near to the airport, so I decided to stay in Seminyak for initial 2 days and then I will keep moving around Bali or in Bali and that's the plan. But what I have been seeing in Seminyak so far are local fashion brand shops and a lot of mini marts and a lot of money exchange places and सबका different rate है and वो सब बाहर लिखा हुआ है। Like अगर मेरे को एयरपोर्ट पे 15.3 मिल रहा था तो यहाँ पे मेरे को 15.9 मिल रहा है या 16.1 भी मिल रहा है किसी किसी शॉप में। एंड या इट्स अ गुड प्लेस जहाँ पे मैं रह रही हूँ, वहाँ से 10 मिनट की वॉक पे बीच है जहाँ पे मैं कल सनसेट देखने गई थी। द बेस्ट सनसेट, सो रिफ्रेशिंग, आई लव्ड इट। एंड नाउ आई एम ऑफ टू सेमिनियाक फ्ली मार्केट। I would say it's a pretty good market. You'll get everything at one place, but ये market थोड़ी जल्दी बंद हो जाती है 6 बजे 8 बजे, I'm not really sure. But trendy stuff for everything, clothes, accessories, bags and home decor भी है. What I would recommend कि एक ही चीज़ 2 दुकानों में पूछ लेना क्योंकि prices may differ. एक ने मेरे को 100 बोला and एक ने 50 बोला for the same thing. So yeah, that thing you should keep in mind. So I'm at Tanalot Temple and I'm here for the sunset and अभी मैं बाहर हूँ तो यहाँ पे काफ़ी souvenir shops हैं मेरे पीछे and I got the ticket and it's for 75,000 which is approximately 390 rupees and I would say it's too much. I just hope the sunset is worth it. अंदर आके भी इतनी सारी souvenir shops है मेरे पीछे. I mean, what is this? नेवर माइंड। तो मेरे को टिकट काउंटर पे उन लोगों ने एक ऐप डाउनलोड करवाई है जिससे आई कैन टूर अराउंड प्रॉपरली एंड ऑडियो भी है उसमें, सो आई कैन लिसन अबाउट थिंग्स एज वेल। सीम्स लाइक मैं एक और फ्ली मार्केट में आ गई हूँ, वो भी तानालॉट टेम्पल के अंदर एंड देयर इज़ ऑल्सो मनी एक्सचेंज हियर, सो आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। Things, there are 6 temples inside the complex. Second is कि ऐप किसी काम की नहीं है क्योंकि वो मैप पे मेरे को बस दिखा रही है मैं कहाँ हूँ लेकिन कहाँ जाना है वो समझ नहीं आ रहा। Third is कि कुछ लिखा ही नहीं है कि what are the directions to follow, so it's a bit confusing and time wasting. And fourth is कि आप टेम्पल्स के अंदर जा नहीं सकते क्योंकि आप लोकल नहीं हो, तो इससे अच्छा कहीं खड़े होके सिर्फ सनसेट ही देख लो यार। I would say I was wrong, like taking a walk around this temples के वहाँ पे जाते हुए views change होते रहे and they were like really good from every point, so yeah, you should take a walk at least.
I review the place, the sunset was not really the best because the surrounding was so crowdy. But then after the sunset, I came to Enjungalu, the temple behind that. I was like, मैं यहाँ पे पहले sunset देखने क्यों नहीं आई, because it was so peaceful and nice from here. क्योंकि ये जगह मेरे को पहले नहीं मिली थी, तो definitely लोगों को नहीं मिलती है पहले. It's just amazing from here. I've been sitting here for half an hour, so too good. Guys, I just bought this and this, a top, and मेरे को बहुत, मतलब जो मैं चाहती थी उतने में मैंने लोगों से बार्गेन कर लिया है यहाँ पे. एंड इसका तो दे स्टार्टेड ऑफ एट अ वेरी लो प्राइस दैन व्हाट आई हैव बीन सीइंग इन सेमिनियाक मार्केट जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ पे, एंड द फ्ली मार्केट. एंड फॉर द टॉप इट वाज सेम एज फ्ली मार्केट, बट आई थिंक यहाँ पे बार्गेन करना वाज ईजियर. एंड मेरे को बार्गेन करना आता भी नहीं है, तो अगर मैंने कर लिया तो आप तो डेफिनेटली कर लोगे अगर आप ऑलरेडी चैम्प हो. तो yeah, this is definitely a recommended market than the ones I went in the morning. So definitely shop from here. And सारा सामान सेम ही मिल रहा है हर जगह पे. So I would like to tell you about 3 things of Bali. So yesterday I got the SIM, right? So of course वहाँ पे rate लिखा हुआ था already, but I bargained on that. And then money exchange के लिए भी हर जगह rate लिखे हुए हैं, but I was able to bargain for that also. So 15,975 का rate लिखा हुआ था दुकान के पास, and I got it for 16,100. And I got it from the authorized shop. Unauthorized वाले और अच्छा आपको rate देंगे. Like I saw the best rate was 16,200. So that was the best rate, but then it was a small shop and unauthorized, so they will not give you a receipt. And what I asked my hostel receptionist, she said कि छोटी shop से मत लेना, आपके साथ scam हो सकता है, so better get it from an authorized dealer, which I got, and I was able to bargain there. And third point is कि बाली में हॉस्टल में रहोगे तो बहुत ही ज़्यादा laid back feel आएगी आपको. So everybody is a westerner here and they like to travel on a slow pace, and we Indians are like सब कुछ देखना है एक ही दिन में types. So थोड़ा सा laid back वाला feel है यहाँ पे. तो हॉस्टल में रहोगे तो आपको और आलस आएगा and you will not be very active, especially if you're alone. But like मेरे को initial 2 to 4 days slow pace पे travel करना था and ज़्यादा कुछ नहीं देखना था. So it was the end of Seminyak. I will be moving to Uluwatu now, so next video will be from Uluwatu. What I would recommend you doing apart from what I did here is explore the nightlife of Canggu or Seminyak. Both are good, just Canggu is more expensive and Seminyak is a better place if you are on a budget. But nightlife would be good of everywhere, I think, across Bali. So yeah, that's about it from the video. I hope you found it informative. Like, share and subscribe, and I will see you soon from another video. Bye.